Value-added processing. I'm in FMCG industry. First and foremost, I would like to say they were good presentations, well organized. I particularly want to mention and comment on Dr. Musaddiq Malik's. You're absolutely right, productivity is the way to go. And there is no other way than innovation. The only person in all the presentations who made a relevant point to the industries that I represent is about domestic, and there being a level playing field for domestic, knowing full well how important export is for us. The second point is about the Prime Minister is here. Ladies and gentlemen, the Prime Minister is here. Siraf will continue with that. Sir, Tashif laiye. Sir, can I invite you to speak right away? जी इन्होंने मुझे कहा कि प्राइम मिनिस्टर फॉरेन स्पीच करेंगे सर सॉरी नहीं अगर प्रेजेंटेशन ले लेते हैं सर सर मेरी गलती हो गई सॉरी उन्होंने कहा था कि करेंगे कारोबार ज़राअत और IT से मुतालिक बिजनेस कॉन्फ्रेंस का मकसद निजी शोबे वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मुल्क में 4 बरस के दौरान 6 लाख लोगों को बेरोजगार किया गया, जबकि 20 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। हुकूमत में आए तो 5,600 अरब रुपए बजट खसारा दरपेश था, जबकि पाकिस्तान महंगाई में तीसरे नंबर पर था। इस्लामाबाद में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क की मईशत इस वक्त मुश्किल घड़ी में है, लेकिन दीगर मसाइल के साथ हम महंगाई को भी कंट्रोल कर लेंगे। करते हुए वजीर खजाने ने साबिक हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में 20,000 अरब का कर्ज लिया। अगर हम पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखते तो हर माह 120 अरब का नुकसान होना था। रूस के साथ साबिक हुकूमत के मुआहदे पर बात करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि हमाद अजहर ने 30 मार्च को तेल के लिए रूस को खत लिखा, लेकिन रूस ने जवाब नहीं दिया। वजीर खजाना ने कहा कि इस वक्त पावर सेक्टर में 1,600 अरब का नुकसान हो रहा है। हमारी पॉलिसी है कि हम IT, ज़राअत, सनत समेत तमाम सेक्टर्स को साथ लेकर चलेंगे। रोजगार देने के लिए कम अज कम 6% ग्रोथ होनी चाहिए। पाकिस्तान में हर साल 20 लाख लोग लेबर मार्केट को ज्वाइन करते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि किसी भी वजीर आजम के लिए बहुत मुश्किल फैसला था कि 2 बार 30 रवी पेट्रोल की कीमत बढ़ाए, लेकिन हमने मुश्किल फैसले लिए और आइंदा भी लेंगे। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत के मुआहदे पर चलता तो पेट्रोल की कीमत आज 300 रुपए होती। वजीर खजाना का कहना था कि इमरान खान हुकूमत को जब पता चला कि उनकी हुकूमत जा रही है, तब उन्होंने सब्सिडी दी। आयल लेने का उनका कोई चांस नहीं था। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि आज चीनी और गंदुम दरामद की जा रही है, जबकि हमारी हुकूमत थी तो तब हम गंदुम और चीनी बरामद कर रहे थे। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि हुकूमत पेट्रोलियम के शोबे में 81 अरब रुपए और तवानाई के शोबे में 1,100 अरब की सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि कम आमदन वालों को पूरे साल पैसे देंगे। आइंदा साल करंट अकाउंट खसारा 1,200 अरब लाएंगे। आइंदा साल 21 अरब डॉलर कर्ज वापस करना है। वजीर खजाना ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सब वज़राए आज़म ने मिलकर 24,000 अरब कर्ज लिया। 1,300 अरब का प्राइमरी डिफिसिट हुआ। कहा गया प्राइमरी डिफिसिट 25 अरब का करेंगे। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सब मिलकर मसाइल पर काबू पाएंगे। उन्होंने वजीर आज़म शहबाज शरीफ की प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मुल्क में 4 बरस के दौरान 6 लाख लोगों को बेरोजगार किया गया, जबकि 20 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। हुकूमत में आए तो 5,600 अरब रुपए बजट खसारा दरपेश था, जबकि पाकिस्तान महंगाई में तीसरे नंबर पर था। इस्लामाबाद में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क की मईशत इस वक्त मुश्किल घड़ी में है, लेकिन दीगर मसाइल के साथ हम महंगाई को भी कंट्रोल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है, बेहतर हालात में छोड़ कर जाएंगे। बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खजाने ने साबिक हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में 20,000 अरब का कर्ज लिया।
अगर हम पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखते तो हर माह 120 अरब का नुकसान होना था। रूस के साथ साबिक हुकूमत के मुआहदे पर बात करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि हमाद अजहर ने 30 मार्च को तेल के लिए रूस को खत लिखा, लेकिन रूस ने जवाब नहीं दिया। वजीर खजाना ने कहा कि इस वक्त पावर सेक्टर में 1600 अरब का नुकसान हो रहा है। हमारी पॉलिसी है कि हम IT, ज़राअत, सनत समेत तमाम सेक्टर्स को साथ लेकर चलेंगे। रोजगार देने के लिए कम से कम 6% ग्रोथ होनी चाहिए। पाकिस्तान में हर साल 20 लाख लोग लेबर मार्केट को ज्वाइन करते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि किसी भी वजीर आजम के लिए बहुत मुश्किल फैसला था कि 2 बार 30 रवी पेट्रोल की कीमत बढ़ाए, लेकिन हमने मुश्किल फैसले लिए और आइंदा भी लेंगे। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत के मुआहदे पर चलता तो पेट्रोल की कीमत आज 300 रुपये होती। वजीर खजाना का कहना था कि इमरान खान हुकूमत को जब पता चला कि उनकी हुकूमत जा रही है, तब उन्होंने सब्सिडी दी। आयल लेने का उनका कोई चांस नहीं था। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि आज चीनी और गंदुम दरामद की जा रही है, जबकि हमारी हुकूमत थी तो तब हम गंदुम और चीनी बरामद कर रहे थे। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि हुकूमत पेट्रोलियम के शोबे में 81 अरब रुपए और तवानाई के शोबे में 1100 अरब की सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि कम आमदन वालों को पूरे साल पैसे देंगे। आइंदा साल करंट अकाउंट खसारा 1200 अरब लाएंगे। आइंदा साल 21 अरब डॉलर कर्ज वापस करना है। वजीर खजाना ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सब वज़राए आज़म ने मिलकर 24,000 अरब कर्ज लिया। 1300 अरब का प्राइमरी डिफिसिट हुआ। कहा गया प्राइमरी डिफिसिट 25 अरब का करेंगे। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सब मिलकर मसाइल पर काबू पाएंगे। उन्होंने वजीर आज़म शहबाज शरीफ की प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। So what happened in the 90s, sir, was the biotech, genetic revolution. And new seeds cropped up. They came in all over the world, but we were unable to get the genetically modified cotton, for instance, and other. Then in the 2000s, the genetic revolution is now an old revolution. We've missed that bus. That bus we missed. And then the next revolution is the precision mechanization revolution that has come in a very big way around the world. Now, the precision agriculture revolution does two things. It enhances productivity and it diminishes your input. It's a double-edged thing where we, as Pakistani agriculture, are getting out of the arena, so to speak, as far as our viability is concerned. So, and now, of course, there is big data, there's remote sensing. If I were to draw an analogy, if at all the textile sector, which is very amply represented here, if they had not gone in and modernized their mills, and if we were still on the mechanical loom, for instance, and the air-jet loom had not been introduced, where would we have been with the textile sector? So the agriculture sector, ladies and gentlemen, has been suffering from the lack of our investment in the prevalent technology of the day. And there is no escaping it. If we are going to be backwards, then we are going to be backwards. I'd like to point out another point, sir, very important. I had the opportunity to visit China. And in China,
we went to several think tanks and we went to their academies, the Chinese Academy of Sciences, the Chinese Academy of Agriculture Sciences, etc. And we put this question to them: how did you break the poverty cycle? How did you get 700 million people out of poverty? So they said it's very easy. And in 2 minutes, they gave us the answer. They said we went through 4 modernizations. 4 modernizations. The 1979 5-year plan was the agriculture modernization. So we started with agriculture modernization. Our second phase was called urbanization, because when you modernize agriculture and you put mechanical systems in there, there is surplus labor. People get, they are no longer required in the production system. So they were ready. They said, we will urbanize these people, and they built towns close to where these people were being displaced. The third, after urbanization, was industrialization, because now you have the labor force in one place and you are able to employ them in the industries, and the agriculture, since it's modernized, is throwing up excessive surpluses. And the fourth is what they called informationization, which is what they are going through now. It is digitizing their whole society. If you want to buy a bus ticket, you can go on your phone and you can buy a bus ticket, etc., all the way to how they manage their economy. Sir, for us, the path to progress is through agriculture modernization. And by agriculture modernization, I don't necessarily mean just the production sector. It means our mechanization sector. It means our seed sector. It means, so essentially, we need to start this journey of agriculture modernization. And हमारे बच्चों ने पेंडू ही रहना है, हमारे grandchildren ने no. These children, our children and our grandchildren, should be urban people. They should be urbanites. And we need to have less people in the villages. A village is not a, however much it may be romanticized, it's not a good place to live. There is ignorance in the village. Excuse me. I'm a bit passionate about this, so I get worked up, so sorry. But so this, sir, is, we have to have a plan for the agriculture modernization. And for this we require, of course, investment. Investment doesn't have to come from the ADP. The investment doesn't have to come from the government budget. Our problem is that the banking sector has totally ignored us. 40 HBL is the largest lender from the private sector to agriculture. You will be surprised to know, sir, that the total book is only 40 billion rupees for the whole of the country. I mean, people sitting over here can easily understand that for a population which is about 50 to 60%, just 40 billion rupees. There is no money. We are starved of capital. So we don't need any subsidies from you. Get off our backs and see to it that the sector is well funded through the commercial means. The 3 main crops that have done so well in the last 5 to 7 years, it's maize, it's potato, and it's rice. All others have stagnated. Wheat has stagnated, cotton has stagnated, sugarcane has stagnated. Just
Very marginally it has gone up. These three crops are deregulated. The government has nothing to do with them. And that's why, let me tell you, they've done well. We get the best seed from the companies. So we need the best technology, and we need to have a commercial point of view about agriculture. We will have food coming out of our ears because this real estate, this agricultural real estate of the Indus Basin is one of the best in the world. You can just have maybe the Nile, the Indus Basin, maybe the Mississippi. You can count the rivers, the great rivers of the world. And we have one of those available to us. And we are sitting in an area which is parched, which has, you go to Afghanistan, you go to Iran, you go to the Middle East, you go all over Pakistan, around Pakistan. They have no water. We have a 12-month growing season. We've just been ignored because we are being perceived as just a traditional, kisan ki, they will always remain like this, and we'll keep throwing crumbs at them. So my one other point is extremely important. In these last decade or so, 3 mergers have taken place. 3 mergers in the world, sir. One is Monsanto merging and creating now with Bayer. The other, they've created Corteva. The third is Chinachem and Syngenta. These 3 companies, they own about 50 to 60% of the seed of the world. They own 70% of the chemicals of this world. Without their intervention in Pakistani agriculture, we will not get too far. So we are only asking for the best technologies that are available anywhere. Our farmers will definitely deliver. And so I urge you to see to it, Chief Saab is here, to interact with them. And we should get our cotton seed, the GM seed, back into our country. Now I'll just point out, sir, the 10 recommendations that the committee, which was formed under Chima Saab. So GST on all agriculture inputs, including seed, machinery, dairy, fish feed, to be removed. So kindly see to it, Mifta Saab, that GST on inputs, we are already reeling. I think there was a gentleman who said, figures don't lie. Motiwala Saab, I think you said, take our figures and then come and sit with us. So please take our figures. How much has our cost of production gone up? And then on the other side, the government sees to it that we have to sell our wheat at 20 to 100 rupees pocket, and he is not being able to get his true muavza. So, but that is our contribution to society. Should be increased to 1.5% of the agriculture GDP, and subsidy on wheat seed, cotton seed, and fertilizer. Special focus on Balochistan for the Kachi and Kirthar Canal. Electricity rate tariff at rupees 8 per unit. Taxation on non-agriculture purpose tractors should be at par. It's been spoken about. The deregulation of milk and meat prices, like poultry, and rebate on meat processing units in Cholistan and Tharparkar.
to promote feedlot fattening business. So thank you for giving us a priority. We need to modernize our agriculture. We will have, I'll give you a rule of thumb figure, sir. 1 million acre-feet of water should be producing $2 billion worth of product. 1 million acre-feet of water should be producing $2 billion worth of product. We have more than 110 million acre-feet of water. We should be doing $200+ billion in production in Pakistan. बजट से कबल कीमती तजावीज़ के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी हैं। वो आज इस कॉन्फ्रेंस में मिसाक मईशत के लिए नेशनल डायलॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। मुसलसल आपको इस बारे में अपडेट कर रहे हैं और आने वाली डेवलपमेंट से भी आपको आगाह करते रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, तवानाई, टेक्सटाइल, IT, मैन्युफैक्चरिंग, बरामदात और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शिरकत कर रही हैं। आज के इस सेशन में शुरका ने अपनी आरा का इजहार किया, कीमती तजावीज़ पेश की। सवाल जवाब का एक सेशन भी हुआ जिसमें वफाकी वज़रा ने सवालों के जवाब दिए। प्री बजट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आज किया गया है जिसका मकसद है निजी कारोबारी शोबे को मुतहर्रिक करना। PTV न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। लाइफस्टाइल अपग्रेड किया तो फैंस क्यों नहीं? रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। AC/DC इन्वर्टर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। वेरी स्मार्ट। सच अमेजिंग फीचर्स जैसे ये 7 स्पीड रिमोट कंट्रोल, बिल्कुल नॉइजलेस। सिर्फ रॉयल AC/DC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। स्मार्ट चॉइस माय क्वीन। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें। पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मुशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर ले जाएं और जदीद तर आसाइशात और फरहत बख्श माहौल, यही तो रिहाइशगाह का हकीकी हुस्न है। अलीज़े गार्डन की इनफरादी जरूरत। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात हुई जिसमें ज़िमनी इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तिफाक हो गया। सिंध न्यूज़ ऑनलाइन के मुताबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस पहुंचे, जहां दोनों के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। आसिफ जरदारी ने वजीर आला पंजाब का ओहदा संभालने पर हमजा शहबाज को मुबारकबाद पेश की, जबकि मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत-ए-हाल और वर्किंग रिलेशनशिप पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इमरान खान का मिलकर मुकाबला करने के अज़्म का इयादा किया और ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तिफाक हुआ। इस मौके पर वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि अवाम की खिदमत के सफ़र में दोनों जमातें एक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। कोशिश होगी पर सतह पर साथ लेकर चलें, जबकि वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से मशावरत का अमल जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का खैर मुकद्दम किया। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के एजाज में ज़ोहराना दिया, जबकि वजीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हमरा सूबाई वज़रा अता तारल मलिक अहमद अली, ख्वाजा सलमान रफीक,
इमरान गोराया भी मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक सदर के अलावा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम हुसैन, सूबाई वज़रा सैयद अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा भी शरीक थे। इससे कबल पीपल्स पार्टी ने वज़रातों के महकमे उनके मुताबिक न मिलने पर नाराज़ी इजहार किया था, जिस पर हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी को कौन कौन से महकमों की वज़रातें मिलेंगी, इस हवाले से आगाह मुलाकात में आगाह किया। दूसरी जानिब साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पीपीपी आसिफ अली जरदारी खुसूसी तौर पर 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे थे। पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर आला पंजाब से मुलाकात के लिए सीनियर वजीर पंजाब हसन मुर्तज़ा को इस्लामाबाद से लाहौर तलब किया था। याद रहे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए कायम की जाने वाली कमेटी से इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को फारिग कर दिया गया था, जिस पर पीपीपी ने बल्दियाती कानून में तरमीम जैसी अहम कमेटी में शामिल न करने पर वजीर आला ऑफिस से एहतजाज किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफे के पेश नज़र पेट्रोल पंप्स पर रश लग गया, ताहम वजीर ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तरदीद कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशुबा इजाफे से परेशान अवाम ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये इजाफे की इत्तलात पर एक मरतबा फिर पेट्रोल पंप्स का रुख कर लिया है। दूसरी जानिब वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तरदीद की है। मिफ्ता इस्माइल ने अपने ट्वीट में बताया कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हो रहा, न ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा का